Hello guys, myself Shakil Ahmed and I have 10 plus years of experience in the software development field, especially development of website, custom softwares, ERPs. Now these days I am working on AI, agentic AI and other automation tool. So this the project I am going to share with you. This is a task management app. There is a backend of task management system, and using Wise you can create or assign tasks to your members. So here you can see the Excel sheet. Right now I'm showing you. These are the Excel sheet where first sheet I put it's a task status, start, in progress, completed, close. Second sheet, all the resources are there: Shakil, Majid, Kamal, Khalid. These are the resources. And the third sheet, whenever you create task using voice, like whenever you say create a task and something, then it will create task here. Okay, right now I'm showing this demo with Excel sheet, Google Sheet, but in future or later on the next video, I will share with you. It will directly create the task with any management system or any database using the API. So this is a demo. It will create this task in this Google Sheet. So now there is three things. First thing is the Flutter app. You can see here is a Flutter app, and simply you will record a voice by clicking this button, mic button. After then, there is a workflow in a 10 automation I used for this. There is a workflow. What it will do? First, it will receive your input and then process using. I have used here free Gemini LLM. So after the processing, it will check from this list what are the question and what I need to reply. Right. So in this question, there is FAQ, get status list, and the create task. If I make it zoom out, then you can see the sheet name create task, right? So I have linked with this sheet by using the credential of Google Sheet, and then I select here my sheet task management sheet. Okay, and inside of this worksheet there is single individual sheets. You can see here all task status. So I selected here all tasks because I need to create task in this sheet, right? So now we will see here what is the flow. You can see, right? See, I'm recording my voice here. Hello. Now it will reply back to me. Welcome to Task Manager waving hand. How can I help you today? Keycap 1 You can see create a guys what is task. the response from the server. Keycap 2 update task LLM. status. Keycap 3 view task. S. So now I want to create a task for Shakil, right? So there's a lengthy step also and the shortcut step. So first I will show you the lengthy step, and then I will create the task using only one prompt or one voice, right? So first I will press this one, number one. Okay, let's create a task. What is the task name? Create a website. What is the task detail? This website will be used in overall Oman. Who should I assign this task to? ठीक है, अब ये Please टास्क choose from उसने मुझसे Shakil, पूछा है, और उसके Ahmed, बाद जो है Imran, ये मुझसे Rashid, पूछ रहा है कि H. टास्क की डिटेल क्या Zain. होगी और वो किस रिसोर्स को असाइन करना है। तो मैं यहाँ से शकील को असाइन करता हूँ। उसको कहता हूँ कि शकील को असाइन करे, असाइन टू शकील। Who should I assign this task to? Please choose from Shakil, Ahmed, Imran, Rashid, H. Zain. असाइन टू शकील। Crossmark sorry, Shakil is not available. ओके, असाइन टू इमरान। What is the assigned date? लास्ट डेट इज 15th of December 2025. White heavy checkmark task create a website assigned to Imran on 15th of December 2025 has been created. ओके गाइस, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं इस शीट में जाऊंगा तो यहाँ पे एक टास्क क्रिएट हो गई, क्रिएट अ वेबसाइट, जो भी डिटेल हमने दी थी इमरान को असाइन करना था, ठीक है।
और ये इसने क्रिएट कर दिया। अब मैं इस टास्क को ओनली वन वॉइस में क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको कि ये फ्रंट एंड कैसे काम करता है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। हेलो। Welcome to Task Manager waving hand. How can I help you today? Keycap 1 create a task. Keycap 2 update task status. Keycap 3 view task, S. अब यहाँ से मैं नंबर 1 प्रेस करूंगा या वॉइस में से कहूंगा नंबर 1। नंबर 1। Okay, let's create a task. What is the task name? Create a task for Haris to design a database architecture for a new application is coming, and detail is this architecture should be on microservices, and the target date is 15th of August. Crossmark sorry, Harish is not available. Okay, please assign this to Hitesh. White heavy checkmark task design a database architecture for a new application assigned to Hitesh on 15th of August has been created. ओके सो गाइज ये तो रहा कि मैंने फ्रंट एंड मोबाइल ऐप से जो है ये वॉइस सेंड की और रिसीव भी कर रहा है, बता भी रहा है आपको वॉइस में। बैक एंड पे ये वर्कफ्लो हमारा एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूशन में जाके देख सकते हैं कि वर्कफ्लो किस किस स्टेप से गुजरा। रिसेंटली हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये अभी 12:26 हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 12:25 पे एग्जीक्यूट हुआ है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। और यहाँ पे इसने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, हितेश को असाइन कर दिया है। ठीक है, क्रिएट डेट आ रहा है, टारगेट डेट आ रहा है, स्टेटस क्या है। ठीक है, अच्छा इसमें और भी फीचर्स हैं। हम इसमें जो है अपडेट की स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो है किसको कौन सा टास्क असाइन किया, तो ये सारी चीज देख सकते हैं। तो लेटर ऑन जो दूसरा डेमो है उसमें मैं आपको ये सारी चीज शो करवाऊंगा। अच्छा, ये अभी एक्सेल शीट के साथ मैंने शो करवाया हुआ है। ये हम जेसन भी कनेक्ट कर सकते हैं, एपीआई भी कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी सिस्टम से इंटीग्रेट हो सकता है। तो अभी तक के लिए यही था। इंशाल्लाह फिर दूसरे डेमो में आपको मजीद और डिटेल शो करवाऊंगा। थैंक यू।